In this video, we will discuss about the subring. So now our topic is subring. So we define subring as that means let R be a ring and S is subset of R. So then S is said to be a ring, said to be a ring said to be a subring, basically said to be a subring of R if and only if S itself a ring, itself a ring under the same operation that of R, same operations that of R. So we remember or revise the operations of R. So that means R is said to be a ring under addition and multiplication. So first thing R under addition is abelian group. R under addition is an abelian group. Abelian group. Second, R under multiplication. R under multiplication is semi-group. And the third R is right distributed and left distributed. R is right distributed and left distributed. So total properties are 9, 5 for first part or 2 for second and 2 for third. Okay, so multiplication is distributed with respect to addition. So we follow the multiplication is distributed with respect to addition. Okay, so follow the 9 property, then R is said to be a ring. So similar, here we write down the definition as then S. S is said to be a subring of R if S itself a ring. That means S also follow the 9 properties. So then S also satisfy the all 9 properties. So that means we can say that the algebraic structure S under multiplication and addition is said to be a subring of R. Subring of R. Okay. So when S satisfy all the 9 properties, so then S under multiplication or addition is said to be a subring of R. So now, so when we are solving the problem based on the subring, so we have one short property, short theorem. So on the basis of this theorem, we can prove that S is a subring or not. So we understand this theorem. The necessary and sufficient condition, necessary and sufficient condition that S is a subring of R. S is a subring of R. So first condition that means when A and B, two element which belongs to S, implies that A minus B belongs to S. And second property, we have A, B, which belongs to S, implies that A into B also belongs to S. If we satisfy these two properties, then we can say that S is a subring of R.
Now, so we shall prove these property, that means theorem. So we assume that let us assume that S is a subring of R. S is a subring of R. अगर S सबरिंग है R का, इट मीन्स जो S है वो सारी प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा होगा R की. दैट मीन्स अंडर एडिशन अबेलियन होगा, अंडर मल्टीप्लिकेशन सेमी ग्रुप होगा, और मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूटिव होगा विद रेस्पेक्ट टू एडिशन by 9 property. So then we take a element B which belongs to S. कोई एलिमेंट B है वो belongs to S कर रहा है, और S क्या है हमारा सबरिंग है. तो सबरिंग में मतलब अंडर एडिशन अबेलियन है, तो इनवर्स एग्जिस्ट करेगा. इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो मीन्स B का इनवर्स माइनस B होगा अंडर एडिशन, which also belongs to S, which also belongs to S. तो माइनस B also belongs to S. So now we take an element A which belongs to S. A belongs to S. So then we use the property plus minus B. A plus minus B which also belongs to S. तो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है? क्लोजर प्रॉपर्टी से दैट A और B belongs to S हैं, तो अंडर एडिशन A plus B also belongs to S. So we apply here the closure property. We take two element. One element हमने क्या लिया, माइनस B ले लिया, और दूसरा एलिमेंट हमने A ले लिया. Both element belongs to S. So that means S is a ring. So satisfy closure property also. So A plus minus B belongs to S. So this can be written as A minus B belongs to S. So A minus B belongs to S. Or similarly, so we have also A and B. We take two element of S, which imply that AB belongs to S. तो ये भी अंडर मल्टीप्लीकेशन क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कराई. ये हमारी प्रॉपर्टी हो गई अंडर मल्टीप्लीकेशन क्लोजर, अंडर मल्टीप्लिकेशन क्लोजर प्रॉपर्टी, और ये अंडर एडिशन क्लोजर. So that means we take two elements. So we have proved both the parts. So that means AB belongs to A belongs to S, minus B belongs to S, so A minus B belongs to S, or AB belongs to S, so then this also AB belongs to S. Now, so we are solving for necessary and sufficient conditions. So we shall prove that conversely. So conversely, let us assume that AB belongs to S. अब हम कह रहे हैं कि ए बी बिलोंग्स टू एस कर रहा है, और ए माइनस बी ऑल्सो बिलोंग्स टू एस कर रहा है, और बी ए इंटू बी ऑल्सो बिलोंग्स टू एस कर रहा है. तो अब हमको क्या प्रूव करना है? तो टू प्रूव दैट, उल्टा प्रूव करना है. टू प्रूव दैट एस इज ए सब रिंग, एस इज ए सब रिंग ऑफ आर, एस इज ए सब रिंग ऑफ आर. सो नाउ, so for proving the subring of R, so we satisfy all the property. That means closure, associative, identity, inverse, right distributive, left distributive, all the properties. So when we take a first element, that means we take A or A belongs to S. जब A belongs to S करा, we take same element. एक ही ग्रुप से, मतलब एक ही सेट से दो एलिमेंट ले सकते हैं. तो A belongs to S, तो which implies that. तो यहाँ पर हमें फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या, ए माइनस बी है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ए माइनस ए. तो ए माइनस ए मीन्स जीरो, और जीरो बिलोंग्स टू एस करेगा. तो जब जीरो बिलोंग्स टू एस करेगा तो मतलब हमारा एडिटिव आइडेंटिटी मिल गई हमें. तो एडिटिव आइडेंटिटी हमारी जीरो, तो आइडेंटिटी सेटिस्फाइड. तो आइडेंटिटी सेटिस्फाइड, तो यहाँ पर हम लिख देंगे आइडेंटिटी सेटिस्फाइड, मतलब आइडेंटिटी उसमें है एस में. तो नाउ, अब हमारी जब आइडेंटिटी उसमें आ गई, तो हमने क्या किया कि एक एलिमेंट आइडेंटिटी ले लिया, दूसरा एलिमेंट हमने ए ले लिया, तो विच बिलोंग्स टू एस कर रहा है. तो इम्प्लाइज दैट जीरो, मतलब ए के प्लेस पर जीरो रख दिया, बी के प्लेस पर हमने ए रख दिया. तो दिस गिव्स अस माइनस ए, तो माइनस ए बिलोंग्स टू एस, तो मतलब एडिटिव इनवर्स भी उसमें एग्जिस्ट कर रहा है. तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, इनवर्स एग्जिस्ट और सेटिस्फाइड. तो इनवर्स एग्जिस्ट, तो इनवर्स आ गया, तो दो प्रॉपर्टी हमारी जो मेजरली होती है, आइडेंटिटी और इनवर्स, तो वो हमारे दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं उसमें. अब तीसरा हमने क्या किया कि ए और बी बिलोंग्स टू एस कर दिया. जब ए बी बिलोंग्स टू एस है, तो विच implies दैट ए
माइनस ए माइनस, तो दैट मीन्स बी, जब बी उसका इनवर्स भी उसमें एग्जिस्ट होगा, बी इनवर्स भी एग्जिस्ट करेगा उसमें, क्योंकि ए का इनवर्स माइनस ए है उसमें है, तो यहाँ पर हम माइनस बी ले लें इसको, तो ए और माइनस बी हमने ले लिया, तो यहाँ पर हम माइनस बी कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा हमारा ए प्लस बी, ए प्लस बी बिलोंग्स टू है, तो यहाँ से क्या हो गया, क्लोजर सेटिस्फाई हो गई, तो दैट मीन्स क्लोजर भी उसमें एग्जिस्ट कर रहा है, तो जो क्लोजर एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसीलिए हम क्या कह सकते हैं इसमें, कि ऑल्सो, अब डायरेक्टली अब लिखने की जरूरत नहीं, कि जो एसोसिएटिव लॉ होगा वो भी सेटिस्फाई करेगा, कॉम्यूटेटिव लॉ होगा वो भी सेटिस्फाई करेगा, और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होगा वो भी सेटिस्फाई करेगा, बिकॉज दीज आर द हेरिडिटरी प्रॉपर्टी, तो दीज आर द हेरिडिटरी प्रॉपर्टी ऑलवेज होल्ड करती है, हेरिडिटरी प्रॉपर्टी ऑलवेज hold. Okay, so we can say that S is a ring. So S itself a ring. We can say that. So this is our sufficient condition. So necessary and sufficient we have proved. Now we have one more theorem related to subring. To prove that the intersection, prove that the intersection of two subrings, intersection of two subrings is again a subring, is a subring. So we shall prove this theorem also. So we are assuming that let S1 and S2 दो सबरिंग ले लिए हमने, S1 S2 be two subrings, means both are satisfy all nine properties, both are subrings uh, of ring R. So to prove that S1 intersection S2 is also a subring of R. So let, अब हमने क्या किया कि दो एलिमेंट हम लेके चल रहे हैं ए और बी, जो दोनों एलिमेंट है वो बिलोंग कर रहे हैं S1 इंटरसेक्शन S2, तो S1 इंटरसेक्शन S2 को बिलोंग कर रहे हैं, तो इट मींस दैट ए और जो बी होंगे वो बिलोंग करेगा S1 को भी, और एंड इंटरसेक्शन के लिए, और ए बी जो होगा वो बिलोंग करेगा किसको, S2 को भी, अब S1 को और S2 को भी बिलोंग कर रहा है, और हम वहां पे ऊपर लिख के चल रहे हैं कि S1 S2 क्या है, बोथ आर सबरिंग, तो अब यहाँ पे हम मेंशन करेंगे, बट S1 क्या है, S1 इज ए सबरिंग, तो S1 हमारी सबरिंग है, तो सबरिंग है, तो सबरिंग की प्रॉपर्टी अभी हमने थ्योरम प्रूव की है पहले, इससे पहली थ्योरम क्या है हमारी, कि जब S सबरिंग है तो ए बी बिलोंग्स टू, अगर एस कर रहा होगा तो ए माइनस बी भी उसमें होगा, और ए बी बिलोंग्स टू एस कर रहा हो तो ए बी भी बिलोंग्स टू एस करेगा, अब ए बी बिलोंग्स टू एस वन है, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, कि जब ए बी बिलोंग्स टू एस वन है, तो विच एम्प्लाई दैट जो ए माइनस बी होगा और इन टू ए बी भी होगा, वो किसको बिलोंग करेगा, एस वन को बिलोंग करेगा। अब सिमिलरली सेकेंड पार्ट के लिए हम कर सकते हैं, सिमिलरली एस टू इज ए सबरिंग, एस टू भी सबरिंग है, जब एस टू सबरिंग है तो उसमें भी हम क्या लिख रहे हैं, कि ए बी बिलोंग्स टू एस टू है, तो यहाँ से भी हमें क्या होगा कि ए माइनस बी और जो ए बी होगा वो भी बिलोंग करेगा किसको, एस टू को। अब देखिए यहाँ से क्लियरली अंडरस्टैंड हो रहा है कि जब ए माइनस बी एस वन का भी पार्ट है और ए माइनस बी एस टू का भी पार्ट है, तो हम क्या लिख सकते हैं डायरेक्टली, हम वी कैन से दैट a minus b, तो दिस we can write that, we can write, तो जो a माइनस बी होगा विच बिलोंग्स टू एस वन, क्या वो एस वन में भी है, और a माइनस बी हमारा किस में भी है, एस टू में भी है, तो विच एम्प्लाइज दैट a माइनस बी बिलोंग्स टू एस वन इंटरसेक्शन एस टू, तो वो इसके इंटरसेक्शन में भी होगा। अब सिमिलरली फॉर ए बी, तो अगर ए बी वो एस वन में भी है और एंड ए बी एस टू में भी है, तो विच एम्प्लाइज दैट ए बी बिलोंग्स टू एस वन इंटरसेक्शन एस टू, तो जब ए बी, अब दोनों प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है हमारी, तो जैसे अब दोनों प्रॉपर्टी क्या हो गई कि ए और बी विच बिलोंग्स टू एस वन
intersection S2 implies that A minus B belongs to S1 intersection S2, और दूसरी प्रॉपर्टी क्या है हमारी, ए बी बिलोंग्स टू एस वन इंटरसेक्शन एस टू, विच इम्प्लाइज दैट ए इंटू बी बिलोंग्स टू एस वन इंटरसेक्शन एस टू। तो इन दोनों प्रॉपर्टीज की बेस पे, मतलब एबक थ्योरम को यूज करते हुए, वी कैन से दैट एस वन इंटरसेक्शन एस टू इज ए सबरिंग। हेंस एस वन एस intersection S2 is a subring।